हाय गाइस, दिस इज़ महिपाल सिंह और आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक डॉगी। एक्चुअली आई लाइक टू ड्रॉ एनिमल्स एंड मोस्टली आई लाइक टू ड्रॉ एनिमल्स. So to make a dog we have to start with the circle of the head. एंड अगर अपन इसको पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर बनाएं, नॉट अ पर्सपेक्टिव एज ए सिंपल बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो शेप्स हैं उनका यूज़ करके, दिस इज द सर्कल एंड यहाँ पे अपन बनाएंगे एक स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर. हमें एकदम परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल होना चाहिए. एंड देन नीचे की तरफ अपने बनाएंगे एक, I think you understand what it is. So this is the cuboid है. अब अपन बनाएंगे इसके लेग्स के लिए थोड़ी सी अपने एनाटॉमी को ध्यान रखें. तो इसकी जो बोन्स इस प्रकार होती है, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका रिब केज. एंड यहाँ पे जो लोअर बैक साइड वाला पोर्शन हो गया. एंड यहाँ पे इसकी जो फ्रंट फुट की जो बोन्स है वो अगर बनाएं तो ये पहले नीचे, फिर ऐसे, फिर देन ऐसे, एंड यहाँ पे जॉइंट है, एंड देन ऐसे करके ये 2-3 जॉइंट यहाँ पे आएंगे. एंड अनदर साइड द सेम. ये वाली बोन, ये नीचे की तरफ, ये हो गया दूसरा फुट, एंड यहाँ पे जॉइंट, एंड यहाँ पे जॉइंट, एंड दिस. ओके. एंड द लोअर पोर्शन इज द सेम एज द अप द फ्रंट. पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन ऐसे. एंड ये यहाँ पे कुछ जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ. एंड अनदर साइड्स बोन ऐसे, एंड देन ऐसे, 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 एंड ऐसे. तो ये इसकी जो बेसिक एनाटॉमिकल शेप्स है ये बन गई है. एंड दिस इज़ द मजल ऑफ द डॉगी एंड दिस इज़ द हेड. ये एकदम बेसिक इसकी जो एनाटॉमी है वो है. अब अपन इस पे डिटेल करेंगे, इसको शेप देंगे, इसको मसल्स देंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ द मजल. यहाँ पे डॉगी की मजल बना देंगे एज ए ट्रायंगल शेप. ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल शेप्स का यूज कीजिए. एंड दिस इज़ द अनदर, जैसे फैन की जो विंग्स होती है ना, इस तरीके से सेंटर मान लो, ये 1 2 3. एंड अब ये ऐसे राउंड मिला दो, एंड ये इस स्क्वायर के ऐसे जाती हुई ये ऐसे चली जाएगी. ओके, ये हो गया मजल. एंड द अपर पोर्शन ऑफ द मजल इज दिस, लाइक दिस. ओके, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे. एंड द माउथ लोअर पोर्शन इज दिस. ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. लेट दिस इज द टंग ऑफ द डॉगी एंड दिस इज द, उस साइड की जो नीचे का जो जॉ है वो हो जाएगा. एंड अब क्या करेंगे, अब अपने को सिर्फ जॉ को इससे मिलाना है, एंड कुछ नहीं करना अपने को, जॉ को सिर्फ इससे मिलाना है. ओके, सो ये जो सर्किल है इसमें ये जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये ऐसे स्टार्टिंग में लेनी थी बट अपन बाद में भी ले सकते हैं. ये वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज द for to make eyes of the animals, of the man, whatever it is. So this is the, this eye, and another side is this eye, and this is the another eye, and this is the pupil in the eye, this and this. Okay, so this is the eyebrow, this is the eyebrow. And then we have to draw ears. So for make the ears, we just find a place to make where the ears is situated. And this and another side we can't see. So
If you put the long ears, this type, you can see that this ear looking so beautiful in the dogs. This is the breed of the dog, a special breed, and the ear is so beautiful. And this is the fur on the head, little bit, and this is the another side. We just dark it. Okay, so let's do the setting in this here, and then we just add the neck. For making the add, we just don't think about how to it's say we just add to this cuboid directly. Little bit curve, and the another side, the जो दूसरी साइड जो इसका जो कान दिख रहा है वो है ये. Okay, this is the tongue, and we just don't need to draw the teeth because it makes look wild, because we are making a cute dog, and if we have to draw wild, we just put the teeth, big teeth in the front. So this is the neck, and we just don't need to draw the muscles of this. We just draw only the leg muscles. Okay, we just need this basic anatomy and then to make the muscles. To making the food, we just keep the attention because this is so hard to make this food. And as the anatomy of the lower legs, we just add the curve line. Okay, and this is the lower portion of the stomach. Okay, it's looking strange now, but it's great. The upper portion of the body, we just used a curve because every animal have a curve in the upper portion like this. This is the curve, and as the curve goes forward, we just draw tail. Okay, you can see how smooth it is, and this is the fur of the tail. You just not draw एकदम straight, and this is the shadow, और ये है इस लेग की shadow. Okay, so ये आपका डॉग रेडी है. अब अपन इसमें थोड़ा सा ग्राउंड भी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज ना दिखे. अब ये इसका जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज दिख रहा है, बट अपन एज ए ग्राउंड या और बाकी पर्सपेक्टिव या फिर जो बैकग्राउंड अगर ऐड करते हैं तो ये सही. जैसे मैं ग्रास बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉल भी बना दी जिसके साथ ये खेलता है. इसकी शेडिंग एंड इसकी शेडिंग. ओके, सो दिस इज़ द रेडी डॉग. अब अपन इसकी जो बेसिक एनाटॉमी लाइन है वो अपन रफ कर देंगे. दिस and this. Okay, so this is looking so great, and this is some black spot on the muzzle, and this is some mustache. Okay, dog doesn't have very long mustache, we just little bit mustache add.
ओके, इफ़ वी पुट एनी, जो इसके ऊपर कई डॉग्स के ऊपर निशान टाइप में होते हैं, ऐसे ब्लैक धब्बे टाइप में, अगर वो ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं अपन। ओके, it is so simple if you put the anatomy first and then draw this form. So this is the dog. Hope you're enjoying that. Please subscribe my channel for more anatomy, figure, drawings, cartoons and many more. Subscribe my channel. Bye bye.